you. Welcome to Super Hope Academy. Today's topic is chemical species. Chemi- Chemical species are number one. First, we will discuss what are ions. Basically, ions are a charged species formed from an atom or chemically bonded groups of atoms by adding or removing electrons. ओके बेसिकली स्टूडेंट्स आयंस वो होते हैं कि जब भी हम किसी एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाते हैं या गेन करता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उन स्पीशीज़ को, चार्ज स्पीशीज़ को हम आयंस कहते हैं। Okay, there are basically two types of ions. Number one is cations. What are cations? Cations are positively charged ions are called cations. And what are second one is anions. And what are anions? Anions are negatively charged ions. Means if we having ions having positive charge, it is known as cations. And if we having ions carrying negative charge, then it is known as anions. Okay, as we know that metals are having the property to lose an electron. It may lose one or more electrons. So generally, metals can form cations. Metals atoms generally lose one or more electrons and form cations. Example, if we look at the example of sodium atom can lose one electron, and by losing one electron, it can form cation. Sodium atom ion having positive charge, and this positive charge ion of sodium is known as cation. Second example is of calcium. Calcium has the ability to lose two electrons as its outermost shell can contain two electrons. So it has the ability to lose two electrons. Calcium is also a metal. It can lose two electrons and carry two positive charge. And this calcium ion carrying two positive charge is known as cation of calcium atom. The second is non-metals atoms usually gain one or more electrons and form anions. As you know that non-metals have an ability to gain electrons. Okay, do you know the non-metals? We will discuss halogens, fluorine, chlorine. So chlorine having 7 electrons in its outermost shell. So, by gaining one electron, it can form chloride ion, and this chloride ion is known as anion. Similarly, oxygen atom has an ability to to gain two electrons. By gaining two electrons, it can carry two negative charge, and this two negative charge oxygen atom ion is known as anion. Okay, now we will discuss how that sodium has a sodium or ion acquires a net positive or negative charge. For example, we can consider sodium ion. Sodium has sodium atom have 11 protons and it has 12 neutrons. So its nucleus have total charge. Its nucleus have total charge of plus 11, as there is 10 electron with total charge of negative 10. If sodium
loses one electron, if sodium loses one electron, so it have, okay, if sodium loses one electron, so it have 10 electrons having total charge of minus 10. So charge on the ion is plus 11, and the charge on an electron is this. So total charge which nucleus atom carry is minus 1. Okay, second is we can solve an oxide ion assessment. That is, explain how an oxide ion has minus 2 charge. As you know, oxygen have oxygen have 8 protons, and oxygen have 8 neutrons, and it have 8 electrons. By gaining 2 electrons, it gain 2 electron. By gaining 2 electron, it have 10 electron negative charge. So total charge of ion is plus 8 and minus 10. So it have minus 2 charge. So like this we can find the charge on oxygen ions. I hope you have understand all the concepts about ions, cations and anions. Okay, let me review this concepts. ओके बच्चों, आज हमने सिंपली स्टडी किया था केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले हमने डिस्कस किया आयंस, उसके बाद हमने डिस्कस किया आयंस दो टाइप्स के होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। बेसिकली आयंस क्या होते हैं? आर चार्ज स्पीशीज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जब भी हम किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो उस एटम के ऊपर एक चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस चार्ज स्पीशी को हम आयंस कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास आयंस दो तरह के, नंबर वन कैटाइन। अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो इसको हम कहेंगे कैटाइंस, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आयन है तो इसको हम कहेंगे एनाइंस। अब हमें पता है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो whenever matter loses one or more electron, it form cations. So जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एज वी नो एज इज नोन एज cations. So metal always form cations. एंड एज वी नो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं हमेशा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो नेगेटिव चार्ज आता है इट्स मीन दे फॉर्म एनाइंस। तो इस तरह एग्जांपल हमने दी थी क्लोरीन की। क्लोरीन जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये हमारे पास एनाइन फॉर्म करता है। इस तरह हमने ऑक्सीजन की स्टडी की कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज आता है। उसके बाद हमने एक सिंपल एग्जांपल देखी कि हाउ वी कैन डिस्कस द नेट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अ स्पीशी।
For example, first we have seen sodium ion. Sodium have 11 protons and 12 neutrons. So total it have, by losing one electron, it have 10 electron. So it have net charge of it have a charge of minus 10. So by charge or ion we have plus 11 plus minus 10 of electron due to electron, and it is, by calculating it we get minus 1 charge. इसी तरह हमारे पास हमने एक असेसमेंट देखी, एक क्वेश्चन देखा, एन ऑक्साइड आइन -2, ऑक्सीजन -2 हैज -2 चार्ज, एक्सप्लेन हाउ। सो हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं, और इस तरह हमने देखा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, जैसे हमने देखा एज एन एबिलिटी नॉन मेटल है, वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास -10 जो है वो चार्ज आ जाता है। तो टोटल चार्ज अगर हम देखें, हमारे पास +8 प्रोटॉन्स हैं और -10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास -2 जो है ओवरऑल चार्ज आता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इजीली सीखे होंगे और लर्न किए होंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा टॉपिक, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। हम न्यू नए इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। ओके, बाय।